are there. So in this part of the test, I'm going to show you that how the test is done, what kind of answers are there. So I'm going to model these answers so that, and also describe the theory behind these answers, that why I'm doing these answers and what makes my answers, valuable to the examiner. But my answers are not 100%. You can have a better answer than me. Anybody can have a better answer than me because it's basically the language test. So people have the different views of the answer. So how the test starts, first of all, you get into the office. So examiner greets you. You should also greet the examiner because it gives you the confidence. Hello, how are you? आपकी traditional greeting जो भी है, good morning, good afternoon, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम आप बिल्कुल कर सकते हैं. Examiners are always welcoming. अगर वो Zoom पर भी हैं तब भी आप कर सकते हैं. Hello and make sure that you are able to hear them. They are able to hear you. तो you make sure. उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि मैं सी योर आईडी. आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आपने एनआईसी पे अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है या पासपोर्ट पे कराया हुआ है, यू शुड हैव दैट इन फिजिकल. सो शो देम दैट. After showing that, they will ask you that they will confirm your name. Okay, that do I have the right candidate? Because there are many examiners taking the test at the same time. So they'll tell you that, for example, it is Kulsum and your surname. For example, Hina Yunus. That am I right? Is it Hina Yunus? And you are taking this test as an academic candidate or general training candidate. So they'll confirm you. You need to be louder enough. Yes, agar koi garbar hai, then you have to say no. Okay. Then they will tell you, introduce yourself. Very casual. आप बिल्कुल बताएंगे कि my name is Binesh, my name is Hina, my name is Azhar, my name is Saad, but people call me. अगर आपका कोई nickname है तो आप ये भी बता सकते हैं कि my name is Hina, but people call me this. My name is Kulsum, people call me that. Something like that. And then I come from this. अपना अपना background बताइए, किस शहर से ताल्लुक रखते हैं आप. सही है, क्या काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप स्टूडेंट हैं तो यू टेल देम दैट आई एम अ स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, आई एम असिस्टेंट manager, I'm nurse by profession, whatsoever you are, you explain that. बताएं. इतनी देर में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगी, ये भी वाले क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं इस पर. बोलेगी कि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एंड देन शी विल आस्क यू दैट आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर. से यस. अगर आपको लग रहा है उनकी आवाज कम है तो आप उनसे बोलें कि कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर, बिकॉज इट्स देयर ड्यूटी टू स्पीक लाउडर फॉर यू, बिकॉज दे आर देयर हियर टू अकोमोडेट यू. So they are moderators and they are facilitators. They are going to help you with this. Then she asks you, which magazines or newspapers do you read? Never ever feel hesitant if you don't read. Say that, no, I don't read. आप अल्टरनेटिव बताओ उसके लिए. और अगर पढ़ते हैं तो सही है. फॉर एग्जाम्पल, yes, I do read a lot of magazines and newspapers, but my favorite is Jung, which is in my own language, उर्दू. अगर मैं नहीं पढ़ता होता तो मैं इसका इसका जवाब भी दे सकता हूँ कि well, I'm afraid I do not read magazines or the newspaper, but I subscribe to online magazines on Instagram and on Facebook, and I read newsletters on LinkedIn. And usually they are about sports, they are about beauty, they are about influencing, they are about money making, they are about medical knowledge. And then, because I have a very small time. तो मैंने देखें रीजन खुद ही दे दिया. आई हैव गिवन रीजन विदाउट एग्जामिनर आस्किंग. और आप देखें ब्रैकेट में रीजन लिखा हुआ भी है कि वाई. इसका मतलब ये आप ही को कवर करना है, एग्जामिनर को पूछना ना पड़े. लेकिन अगर आपने से बोला कि यस, आई डू रीड मैगजीन एंड माई फेवरेट मैगजीन इज जंग और माई फेवरेट मैगजीन इज मेडिको ऑनलाइन, देन एग्जामिनर पूछेगा वाई. एंड दैट्स नॉट अ राइट थिंग. एग्जामिनर को नहीं पूछना चाहिए. आप खुद आप कवर कर लें जैसे मैंने किया. उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर यू मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग. आपने बताया कि वेल आई लाइक टू रीड मोर ब्यूटी आर्टिकल्स, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स आर्टिकल्स. आई लाइक टू रीड. इसमें बिल्कुल शर्म खाने की जरूरत नहीं है. आपको जैसे आर्टिकल्स पसंद है आप बताएं. सही है. I always look for the articles about the medical knowledge, nursing information, particularly going abroad, settling in different parts of the world. What are the requirements? Anything that you do, you like, you do it. And uska reason there because I want to go to abroad, because I'm interested in cooking, because I'm interested in becoming beauty influencer. Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? आपने बताया कि yes, I have read a lot of magazines and magazine and newspaper in English. English is a foreign language in my country because we speak the different language. Punjabi, we speak this is this. अगर इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच भी बोल सकते हैं आप, हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं. ठीक है. और आप उस न्यूज़पेपर का नाम दें और आप बताएं कि आपने कब. आपने बताया कि मैंने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़े हैं, या मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में पढ़े हैं, या मैं अपनी जॉब के साथ पढ़ती हूँ.
Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn a language? Why or why not? It's all up to you. Uh, well, I think that it is one of the best ways, but not the only way to learn a language, because by reading a newspaper or magazine, we can have a lot of sentences, new words, vocabulary, and the context. And I have personally learned myself a lot of my English from newspapers. मैंने रीजन भी दे दिया कि मैं क्यों उसे सही समझता हूँ. Is that okay? I need your reaction. क्या आपको मेरे आंसर समझ में आए हैं? Please react if you agree to. Bushra and Hina Yunus and Hina Shar. Yes, sir. Okay, thank you. बेटा रिएक्ट कर सकते हैं आप. You can also react it instead of unmuting. Thank you. ये तो हो Yes, गया sir. पार्ट 1. पार्ट 1 के अंदर जरूरी नहीं है कि 3-4 ही हो, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टू गो शॉपिंग? आपने बोला यस आई डू, आई लव टू गो शॉपिंग. माई फेवरेट शॉपिंग स्ट्रीट इज तारिक रोड विच इज इन कराची. या माई फेवरेट शॉपिंग इज venue is Dubai, and I often go there at the end of the year and I do a lot of shopping there, something like that. तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं. एग्जामिनर लिमिटेड नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए, एनीथिंग. उसके बाद आ जाता है पार्ट 2. एग्जामिनर बोलेगा कि नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2. बिल्कुल बात करते हैं आपसे इस तरह. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक. यू हैव 1 minute टू प्रिपेयर योरसेल्फ. यू कैन मेक नोट्स इफ यू वांट टू. एंड देन आफ्टर 1 minute यू विल हैव टू स्पीक फॉर 2 to 3 minutes अबाउट दैट टॉपिक. एग्जामिनर ने आपको एक टॉपिक दिया, आपके पास 1 minute है, पेंसिल एंड पेपर है. डू नॉट वेस्ट दैट. उसके ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और खासतौर पर टॉपिक को सही से पढ़ें. अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रेस्टोरेंट दैट यू एंजॉयड गोइंग टू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक और टॉपिक है डिस्क्राइब द रेस्टोरेंट यू ऑफन एंजॉय गोइंग टू. दोनों में फर्क है. यहाँ पे एंजॉयड मतलब पास्ट, इसको देखना है आपने, और ये कोई एक्सपीरियंस की बात कर रहा है. और ऑफन एंजॉय इसका मतलब आप बार बार उस रेस्टोरेंट जाते हैं. तो दोनों में फर्क होता है. तो बहुत ध्यान से देखिएगा. वो पूछता है वेयर द रेस्टोरेंट वॉज, वाई यू चूज दिस रेस्टोरेंट, chose this restaurant, what type of food you ate. सब पास्ट में है, तो इसका मतलब आपका टॉपिक जो है वो एक्चुअली इट विल रिमेन इन द पास्ट. यू गॉट इट राइट. सो फार सो गुड. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मिनट में से प्रिपेयर कर लिया. अब मैं इसे बोलना शुरू करूंगा एंड आई विल स्पीक फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 3 मिनट और 2 to 2.5 minutes. मैंने शुरू किया, मैंने कहा द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इज वन ऑफ माय favorites. It's actually about the restaurants that I enjoyed going to. So let me tell you that I have been to many restaurants in the US since I came in here. But one of the best restaurant, one of the best experience that I had is called the food chain called Taziki's. Taziki is basically the Mediterranean restaurant with a blend or the touch of some Asian food and Asian cuisines. It has the best salad, it has the best chicken, it has amazing thing. So and it is right at the corner of my university, just 10 minutes walking distance. So I went there, and I went there for the first time in August when I was feeling hungry and I was looking for a good place. So Google suggested me that restaurant. That's very interesting that Google saw my history, or the type of the food that I look for. So on the basis of that, I was suggested and I went there and I chose to eat their Mediterranean salad with the chicken, strips. And when I ordered it, the best thing about that restaurant that they were so quick to serve it, even in the afternoon, the rush hour. All of them were very friendly. And when I started having that food, I found out that it's not only delicious and tasty, but it was not only delicious and tasty, but it was also very, very, nutritious and very healthy, and very healthy as well. So and look, I looked at their hygiene, I looked at their system, especially in the serving of the water, serving of the plates. Everything was fine from up to the mark, and almost I spent 30 to 35 minutes there eating my food, enjoying the environment of the restaurant. And even, they were courteous enough to offer me another, serving of sauces that they offer, because their sauces were really, very good, along with their salads and the chicken stripes. I really enjoyed myself that experience, because it was not very expensive as well. Hardly my bill got up to $13, and which is quite nominal if you want to have the complete big portion. The another special thing about their tzatziki is that their portion was so big that I was able to take away some part of it and I could eat it later in the evening. So
I believe that this kind of restaurants, which are not heavy on the pocket and also serve the best food, are always fun. And this experience is something that I would recommend a lot of people to go and experience that. And I even recommended my friends who went there and they were happy about my recommendation. So I'm thankful to Google at that day. And I love to go to Tazikis again and again. And that's why my experience. Thank you very much. अगर आप देखें तो मैंने 2-3 मिनट कंप्लीटली बोला है इसको. आपको 3 मिनट बोलने की जरूरत नहीं है. आपने 2 मिनट बोलना है. अगर आप देखें तो मैंने हर चीज कवर की है. पहले तो बताया रेस्टोरेंट कहाँ है. पहले तो मैंने स्टोरी बताई मुझे रेस्टोरेंट कैसे पता चला, ताकि एक बैकग्राउंड बन गया उसका. फिर मैंने बताया कि रेस्टोरेंट कहाँ है. यूनिवर्सिटी के कॉर्नर पर है. फिर मैंने बताया कि मैंने चूज क्यों किया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. मुझे गूगल ने वो दी थी, सजेशन दी थी. और इस पे एशियन रेसिपीज थी इसमें कुछ. फिर फूड मैंने किस तरह का खाया, मैंने अपना फूड को डिस्क्राइब किया, मैंने उनकी सर्विसेज डिस्क्राइब की और मैंने क्या क्या एंजॉय किया वहाँ पे. और एंड में मैंने फ्लिप किया प्रेजेंट में. पूरा पास्ट का टॉपिक था. जब मेरे सारे क्वेश्चन कवर हो गए तो मैंने इसको फ्लिप किया प्रेजेंट में. ये कहलाता है एडिशनल फ्लिप. इससे एग्जामिनर को अंदाजा हो जाता है कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कवर कर सकते. सो इट इज लाइक दैट. इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Okay, then I'll be examiner will ask you few follow-up questions. For example, did you go there again? Would you like to go there again? I would say yes, definitely. I would like to go there again. I told you that I'm going there again and again. Or are there any other restaurants like that? तो मैंने बता दिया कि yes, there are many other food chains like Tzatzikis, like Chipotle, and this and that. मैं इस तरह करके उन्हें बता दूंगा. फैक्चुअल नहीं होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर बोले भाई चिपोटले तो है ही नहीं नेशनल में या कहाँ पे. मतलब एग्जामिनर आपकी फैक्ट्स पे नहीं, वो आपके कम्युनिकेशन पे काम करेगा. फिर वो बोलेगा कि नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 3. आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. यू हैव टू आंसर मी इन डिटेल with the reason. The first question is, why do you think people go to restaurant when they want to celebrate something? अब देखिए, इसकी जो टिप है वो मैं आपको बता देता हूँ. पार्ट 3 को एक्सपेंड करने के लिए रीजन दें. सही है. आपने बोला कि वेल, आई थिंक दैट a lot of people have started going to the restaurant to celebrate their festival. Is that number one, they want to change the environment, not all the time at home. Number two, I believe the second reason that I believe is basically the food. Most of the time, restaurant food is instant and you don't have to cook. You don't have to do a lot of hassle at home. So restaurants become more convenient. And now restaurants have started offering the corner for the celebration. So that's icing on the cake. बस इतना आंसर देके आप आगे बढ़ जाएं. विच आर मोर पॉपुलर इन योर कंट्री, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स? अब मैं इसका जवाब शुरू किया. मैंने कहा कि वेल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर बिकमिंग वेरी मच पॉपुलर दीज डेज इन माई कंट्री विच इज पाकिस्तान. बट अगेन, the popularity of traditional restaurants, saji houses, biryani centers can never match or can never be matched with the fast food because they are always 2 or 3 folds ahead. All the traditional restaurants in Pakistan are full all the time. Even families would like to go to eat something. They hardly choose fast food. They rather often go to the traditional food systems across my country. Fast food is usually liked by young teenagers and children. That's it. Why do you think that is? अब मैं इसका reason बताता हूँ. Because Pakistani food is amazing. The traditional restaurants serve the best food, and the serving is amazing. Fast food restaurants are not considered to be very healthy. It's like that. Okay. अच्छा, इसमें मैं एक आंसर आपको कंपैरेटिव भी देना चाहता हूँ और एक मैं आपको फ्यूचरिस्टिक आंसर भी देना चाहता हूँ. अभी देखें, some people say that food in expensive restaurants is always better. नहीं, do you think that there will be a greater choice of food available in future or will be the less choice? ये फ्यूचर का क्वेश्चन है. याद रखिएगा, फ्यूचर के क्वेश्चन को आंसर करते वक्त आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब होते हैं. एक होता है माइट और एक होता है विल. विल आप जब यूज करते हैं जब आप श्योर होते हैं. माइट आप जब यूज करते हैं जब आप खुद श्योर नहीं होते. अब मैंने इसका जवाब दिया. मैंने कहा कि वेल, आई थिंक दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ फूड चेन्स एंड ऑल काइंड ऑफ फूड विल बी अवेलेबल. But I'm not sure there might be less choice of food because people might like to continue eating what they eat. Or, the young people will definitely do experience. For example, now the younger generation in Pakistan has started opting for Thai food and also Arabic food, the Middle Eastern food.
becoming popular. So I believe that in future they will choose to have more international food, continental food. So they might open more restaurants और that. तो might और will का मैंने दोनों का इंतजार जो कॉम्बिनेशन है मैंने आपको मेंशन कर दिया. So this is how it works actually. Is that okay? So this is all I did the modeling of the test, the sampling of the test. That'll help